भाई बहनों को हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है। ऊपर से नीचे बहुत तक मोबाइल दिया था। अब हो जाए चार्ज कमेंट करके लगाओ। राधे राधे, सीताराम दोस्तों, हर हर महादेव आप सभी को। लाइक करने के लिए थैंक यू। सीताराम सीताराम हर महादेव। राम राम, राधे राधे। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए जिसकी आईडी है। वो बिना कमेंट शो नहीं कर रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। चलिए जी, आप सभी को हर हर महादेव, राधे राधे। लाइक करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब हम लोग जा रहे खाना खाने। आ जाइए आप लोग, जिसको जिसको खाना खाना है खा लीजिए। हाँ भलू मजा है। लाइक करने के लिए थैंक यू। लाइक के साथ साथ आप लोग कमेंट भी कीजिए। 11 लोग की वाचिंग दिख रही है, 21 लोग हो गए। प्लीज़ आप लोग क्या कर रहे हो? सीताराम सीताराम, हर हर महादेव। दीदी नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। लाइक के साथ आ जाओ, खाना खा लो, भाजी रोटी। मोबाइल किसी की चार्ज नहीं है सर लोग। पीछे कौन है? पीछे दीवार है। आपके जैसा मेरा घर नहीं है ना दीदी, आपका तो एकदम पूरा एकदम वीआईपी है। ये मेरा यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है, इसीलिए ढक के रखी हूँ। हम खा लीजिए, दीदी आप खा लीजिए। वो वाला रूम तो मेरा सही है, पर ये वाला बहुत, इसमें बहुत सामान रखा हुआ है। इधर कपड़ा, उधर बर्तन, उधर सब डब्बी डब्बा।
कमेंट हाइट हो रहा है। क्या है? सभी लोग को राधे राधे सीताराम। कमेंट हाइट हो रहा है भाई, छोटा छोटा आप लोग कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं दीदी। घर तो हाँ दीदी, नहीं इसको ना सही करना है। बहुत ये नहीं समझ में आता है हम लोग कहाँ सामान रखें, जब इतनी जगह है तो कहाँ लेके जाएं। पानी देके आती हूँ, पानी। रोशनी मटका ना, ये उसका है, क्या बोलते हैं, सीमेंट का। देखो बस पोत के आज लगाया था। वेलकम तो लगाता है वही ना, देख पूरा छूट रहा है वो मटका। इसका बस ऐसे मिट्टी पोता है ऊपर से, और मटका सीमेंट का है। खाना खा लीजिए। हाँ अब जा रहे खाना खाने। और सब लोग पता ना कहाँ भाग गए, देखो बंद करते। एक ही दो तो रूम है, एक को साफ सुथरा थोड़ा रखते, कोई आया गया। इसमें ज्यादा सामान नहीं रखें।
दीदी नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। वेलकम है आपका। दीदी आपका लाइव कितने बजे आप अपना लाइव चला रही हो? दोपहर में? शाम वाला अच्छा टाइम था दीदी। दोपहर में तो सर्विस भैया की चलती है। आप अगर शाम वाला, हाँ शाम वाला कर दो। शाम वाला तो अच्छा रहता, मैं आपको आराम से 1 घंटा दे देती हूँ, बेसी भी हो जाता है। इतना इंग्लिश नहीं आता है हमको। तो बताओ। चलो और आईडी भी मेरे पास एक ही है, मैं परेशान हो जाती हूँ। राम राम, राधे राधे। हाँ दीदी इंग्लिश नहीं आती है, बहुत कम आती है। सिस्टर आप, मैं कहाँ से हूँ? सिस्टर आप कहाँ से हो? मैं दीदी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, यूपी से हूँ, बनारस से हूँ। एक साथ में सब जवाब दे दी, क्योंकि उतना इंग्लिश मुझे नहीं आता। हाँ मैं बताई थी तो कि मैं बनारस से हूँ दीदी, यूपी बनारस, मरकंडे महादेव। मेरा 2 जिला पड़ता है, गाजीपुर पड़ता है, एक बनारस पड़ता है। मायके गाजीपुर पड़ता है, ससुराल बनारस। मरकंडे महादेव पता है आपको? कैथी में मरकंडे महादेव। लाइक करने के लिए थैंक यू। असली आईडी से आएगा।
लाइक डन, थैंक यू दीदी लाइक करने के लिए। राम राम, राधे राधे, मैं वहीं की हूँ। हाथ चेक कर लीजिए, उसमें भी सुंदर भजन नहीं है। हाथ चेक कर लीजिए, उसमें भी सुंदर सुंदर भजन गाई। हाथ चेक कर लीजिए, उसमें भी सुंदर सुंदर भजन गाई हूँ। किसमें दीदी? अच्छा, आप भी बनारस में हो? कहाँ से? बिंदु दीदी, कहाँ से हो आप? रंजन दीदी, राधे राधे। सो गई हो क्या? सर्वेश भैया आज कहाँ गए? सो गए लगता है। कहाँ से हो दीदी? बनारस। मैं आने वाली हूँ। तो कटका है ना, जब मेरा लाइटिया है ना, वहीं पर मेरा बर्तन का स्टैंड पड़ जाता है, उतना ऊपर थोड़ा से आड़ हो जाता है, इसीलिए इसमें साफ हो दिखता। राम राम, राधे राधे, सीताराम, हर हर महादेव। नहीं कविता दीदी, सोई नहीं हूँ, की बातें सुन रही हूँ। तो मैं सुन रही हूँ। अच्छा आज सर्वेश भैया लगता है सो गए। दीदी आज आप मिला था, बताओ। आज तो मैं पागल हो गई थी। मन करा था भैया फोन लगाऊं और कितनी बातें सुना डालूं। बोली जाने तो जैसे इतना कुछ दिन और चलो सब। ये तो हाथ इतना बेकार हो गया ना दीदी मेरा, पूछो मत। दवा लगा, इतना चचहा रहा है। आप मेरा कमेंट पढ़ ही नहीं रही हो। पढ़ तो रहे हैं। राधे राधे, सीताराम। कहाँ कहाँ गया, कहाँ गया? मैं भी बनारस से हूँ। उसके बाद फिर क्या है? राधे राधे, राधे राधे, सीताराम, यही है ना? आप मेरा नहीं पढ़ रही हूँ दीदी, कमेंट पढ़ रही हूँ। आपका पूछ रही थी आप बनारस में कहाँ से हो। मैं बताई चौका। अच्छा, चौका घाट। ओह, ठीक है, चलो तब ठंडी में मुलाकात करो हमसे। चौका घाट पे हो तो अभी मैं मुंबई में हूँ। इस समय मैं मुंबई में हूँ दीदी, तो अभी कैसे मिल सकती हूँ बताओ? नौका घाट के बाद नोमो 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 घटाइए 5। क्या लिखे हो 5 दिन के बाद? नोमो क्या होता है? नोमो नहीं समझ में आया दीदी। ये क्या लिखा है? अनिकेत। हेलो भैया जी, राधे राधे, सीताराम, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका। नौका घाट।
हाँ, मैं आऊंगी, ठंडी में आऊंगी मैं, दीपावली पे गाँव। इधर कहाँ। सीताराम सीताराम, हर हर महादेव। अनिकेत भैया कहाँ चले गए हो आप? लाइक करने के लिए थैंक यू भैया, सब्सक्राइब कर देना है आप। राम 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 राम, राधे राधे। जय हो सभी भाई बहनों को, जय हो, राधे राधे, सीताराम। दीदी छोटा छोटा कमेंट डालिए ताकि कमेंट हाइड ना हो ना। राम राम, राधे राधे, सीताराम, जय श्री राम। जय हो, राधे राधे। मुंबई में कहाँ रहती हो विरार? विरार रहती हूँ मैं, मुंबई में, नाला सोपाड़ा, बसई, विरार। यहाँ पे अगर आप कहीं भी बोलोगे ना तो हम आपसे कहीं भी मिल सकते हैं। नाला सोपाड़ा, बसई, विरार, 3 ठिकान। क्योंकि हम इतने दूर में ही रहते हैं, उससे आगे न जाते हैं न किसी से मिलते हैं बाहर। राधे राधे, सीताराम, हर महादेव। अभी तक हमको कोई जाना ही नहीं दीदी मुंबई में, क्योंकि घर से बाहर कोई हमारा काम ही नहीं है। जो है वो घर के अंदर है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सीताराम। हमको नहीं हम सोचे कि आप हो इधर ही, इसीलिए पूछ रही हो मतलब इधर ही हो। मेरे पास 2 मोबाइल, दोनों ऊपर चार्ज में लगी है। अरे 10 पॉइंट चार्ज है, बताओ। घर से निकलती है फुल चार्ज होके, और रास्ते में जा जा थाक हो जा, खत्म ही हो जाती है। लाइक करने के लिए थैंक यू। सर्वेश भैया की भाभी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो दीदी जी आप? मैं बढ़िया हूँ भाभी, आप बताइए आप कैसे हो? मुझे पता है भैया तो सो गए होंगे। रंजन दीदी जी, रंजन दीदी की नमस्ते प्रणाम रंजना दीदी नमस्ते प्रणाम, राधे राधे। कन्या भाभी लिख दी थी अंजना। मेरा 5-4 से, अरे बाप रे। भाभी नमस्ते प्रणाम, राधे राधे। खाना पीना हुआ? दीदी चार्ज पे लगा के ऑन करके छोड़ दीजिएगा, नंबर बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। हाँ दीदी, खाना पीना हो गया। तब अभी क्या कर रही है? सो जाओ, सब लोग आपको अब नींद आएगी, काहे घबरा रही हैं हमको? अच्छा, हम
जब सुबह सोते हैं ना तो एक बार नींद टूटती है 5 बजे। ठीक। तो लैपिया चलाना था तो हम उठ जाते थे। अब लैपिया नहीं चलाना रहता है तो सोचते हैं कि 6 बजे उठे, चलो आधा घंटा और सो लेते हैं। आधा घंटा में सोते बज जाता है 7:30। कभी 7 तो कभी 7:30 तो कभी 8 तो कभी 7:45। सब खाना पीना हो गया है दीदी, अब तो सो जाओ बस। सोएंगे सोएंगे भाभी, हम भी सोएंगे। अब मुझे नींद आ रही है। दीदी लगा के सो जाओ, फिर हम बंद कर देंगे। चलाएंगे 12 बजे तक, 1 बजे तक वो चलेगा। बाय बाय। राधे राधे राधे। सीताराम सीताराम, हर महादेव। भाभी आपको नींद आ रही है? मोबाइल के 5 चार्ज है। ठीक है दीदी, चार्ज पे लगा दीजिए। आज लाइट नहीं थी, हम भी नहीं दिन भर सोए हैं। ऐसे ही मेरा दवाइया थोड़ा दे दो। लीजिए पे होगा दवाइया। सब पन्निया पी गए। वाह मटका पनिया देखो पूरा छोड़ सिरमीट का है मटका। लाइट नहीं है, है? नहीं अभी लाइट तो है पर दोपहर में लाइट नहीं थी। फ्रिज पे दवाई है। राम राम, राधे राधे, सीताराम। अरे भाई मेरे यहाँ अच्छा आपके यहाँ नहीं है? बहुत गर्मी है दीदी, बहुत गर्मी। एकदम हालत खराब है। हमको तो जैसे लग रहा है जिंदगी में पहली बार गर्मी ऐसे पड़ रही है। अगली बार नहीं पड़ा था जी, बारिश चालू हो गया था ना। मैं जाऊंगी कल के बाद परसों।
हम कहो तलीना के कहूँ देखा चमड़ी वाला डॉक्टर रहता तो जो जो अरे अनेरा जाए कहाँ जाए बिना जान पहचान बिना पता लगौले सॉरी लेबिया चालू है। रंजना दीदी सो जाओ अब। ये भाभी सबको बस सुलाने पे लपटी हो, क्या बात है, क्या चाहती हो आप बताओ। भाभी एक तो आप मेरे से बात नहीं करती हो, पता ना क्या आईडी में कर दी हो कि आप दिखती नहीं हो। वाह भाई हाँ, ये बात तो सही है। नहीं आप लोग नींद मत खराब करिए, बस मोबाइल ऑन करके छोड़ दीजिए, फिर हम बंद कर देंगे, अपने आप बंद हो जाएगी। बोलो बोलो दीदी, दिल खोल क्यों हाँ, जब दिलवा खोल देंगे तो फिर क्या बोलेंगे। इस समय हम फोन नहीं कर रहे ना, कल सुबह में करेंगे, तब बात करते हैं आपसे। अरे ओ क्या है भैया के आदर्श आदित्य भैया फोन उन किए थे, बात और हुआ। गनमा बड़ा सुपर हिट हिट गा रही हो भाभी, कहाँ से लाती हो। देखो अब हम बातें कर रहे तो उनको नींद आ रही, लगता सो गई। इस सर में इतना गर्मी हो रही है मेरे ना। ये बार वाला कोई छैगा है मेरा, गर्मी गर्मी बरो खराब हो गया। रंजना दीदी लगता है भाभी दबक पड़ी। भाभी को लगता है नींद आ रही है दीदी, वो सो रही हैं। सो दीदी, बात क्या करना है, सो सो।
बताइए क्या बातें करूं आपसे। हमसे आप मत बातें कीजिए, आप जीजा से बातें कीजिए। आप सोइए मोबाइल ऑन करके। अब मैं भी चलती हूँ सोने, जब तक चलेगा चलेगा, सो जाऊंगी सो जाऊंगी। भाभी लगता है सो गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो आ भी गई। भाभी नींद आ रहा है तो सो जाओ। ये तो मन मौजी की लाइट चल रही है। आज तो 8 घंटा मिला था, पूरा दिमाग का। ऐसा ऐसे कहाँ हो सकता है कि आप लोग जागो और मैं सो जाऊं। अरे हो सकता है, आप आंख मूंद लीजिए देखिए। मैं कहाँ सोई हूँ, दिखाओ, कैमरा ऑन करो। गर्मी इतना पड़ रही है कि हमको नींद नहीं आएगी। आंख मूंद आंख मूंद लेती हो तो काला काला नजर आता है। अखियां मुनाएगा तो कहाँ आएगा नजर। अरे ऐसे कैसे काला काला नजर आएगा। आंख मूंद के और किसी का चेहरा याद कीजिए आप, मतलब जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करती हो। देखो कैसे नहीं दिखता है, दिखेगा सब। खाए के लिए काला काला दिखेगा। मैं तो आंख मूंद के कभी सोती ही नहीं हूँ। मैं ऐसे जागते जागते रहूंगी, कब आंख ढक गई पता ही नहीं चला। हाँ मेरे ये जो है ना, जबरदस्ती नींद नहीं आएगी, लेकिन जबरी आंख मूंदते रहेंगे तब जाके सोए, क्योंकि दिन भर सोते हैं और रात भर सोते हैं, और 10 बजे के बाद उठते हैं सुबह में। सबसे ज्यादा किसी सबसे ज्यादा आज तक किसी से अरे नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा। बताओ, सर्वेश भैया है, बच्चे हैं, माँ बाप है, घर परिवार है। बताओ सबसे ज्यादा कौन है, भैया या बच्चे। बच्चे का तो अलग रहता है, मतलब माँ बाप का, मतलब बच्चों का अलग रहता है। ठीक। मैंने सोची। अरे नहीं, मैं आँख खोल के भी नहीं सोती हूँ। मैं ऐसे ताकती रहूंगी ना, मतलब ऐसे कोई चीज देखती रहूंगी, टुकुर टुकुर उसी पे ताकती रहूंगी, फिर सो जाऊंगी। अब मुझे नींद नहीं आती है तो मैं सीधा इनको परेशान करना चालू कर देती हूँ, ताकि कैसे मुझे नींद आ जाए, फिर मैं बाजते बाजते सो जाऊंगी। मैं सोने जा रही हूँ। हाँ देखो, तब काय के लिए अंधेरा अंधेरा दिखेगा, नहीं दिखेगा। ऐसी बातें करते करते कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता है। सो जाओ, रंजना दीदी लगता है सो गई, नहीं तो अब तक कोई ना कोई कमेंट आ जाता। मैं भी म्यूट पे रखूंगी, जब तक जागूंगी जागूंगी, फिर तो चलती रहेगी।
सभी भाई बहनों को राम राम, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम भाभी, गुड नाइट। रंजन दीदी का क्या पूछना है दीदी? ऐसी एसी का बटन, हाँ दबाएंगी मस्त सोएंगी। सही कोई तो सही है, फिर भी किसी को तो जिंदगी में सुकून है। नहीं, अब यहाँ पे बहुत गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, पंखा से भी रहा इसलिए है। और फिर बनाया हुआ रहता तो एक बार एसी भी लग जाती, लेकिन पतरा है, ऊपर से धूप, वैसे ही गरम गरम रहता है। आप लोग के यहाँ तो उतना पंखा चलता होगा तो ठंडा रहता होगा ना, क्योंकि छत वाला है, ऐसे मतलब ढलैया वाला है, बिल्डिंग है ना। हमारे यहाँ तो वही सिरमिटिया वाला वही पतरवा है, वो जो तपता है इतना, दिन में रहा ऐसे रहेगा ना रातिये में रहेगा। जब 3 बजता है कि नहीं, तब जब पतरा एकदम ठंडाएगा तब थोड़ा सुकून की नींद आती है, तो सुबह हो जाती है। हाँ भाभी, अब तक तो तब बोले ओढ़कर सो गई, लाइट ही कट गई। भाभी लाइट ये धोखा दे दी। स्त्री में हाँ भाभी लिखी रहती है, गलत लिखा गया। अच्छा। अब वही सुधा दीदी वाली हाल, वही सुधा दीदी वो कैसे बोल रही थी सुबह ना, अरे ऐसे कैसे गूगल लिख दिया, ये गूगल लिख ही नहीं सकता। लिखो कुछ, लिख देता है कुछ और, हाँ वही ना। लड़ाई करवा देता है। हाँ, नहीं अगर समझने वाला होता तो समझ जाता, क्योंकि उसमें बस क्या लिखा, मैं उसको चाहती तो मैं तुरंत डिलीट कर देती, पर मैं डिलीट क्यों नहीं की, डिलीट भी नहीं मैसेज किया जाता है ना, एक मैसेज ऐसे चला गया तो मैं उसको डिलीट कर दी। अच्छा दीदी इतनी टाइम नहीं आई थी ना? हाँ, आवाज को म्यूट कर दीजिए। ये भी तो एक क्या हुआ दीदी? भाभी सो गई हो कि जाग रही हो?
हाँ दीदी ऑन करके रख दीजिए, सोइए। मैं भी करना, ये जा रही हूँ म्यूट पे करने ना।